Good evening, everyone. So, today is day 29th of 50-day free discussion. Please let me know if my voice is audible, because it's from my part it would be difficult to gauge whether I'm audible or not. So, if you could just write in comment section if I'm audible. Okay, I think I'm audible. This is what has been conveyed to me. So, let's get started. Okay. Today we will be attempting to understand the interconnections between geography with festivities and art and culture of India. Why do I find this topic to be discussed or important to be discussed is because in recent past APSC Mains has been asking questions which are interconnected in nature. The number of questions asked in isolation are reducing by every passing examination. My understanding is at least 50% of the questions in this means you would see establishing interlinkages between different topics of different subjects of the syllabus. So here is an attempt to see and comprehend if there exists any interlinkage between geography, art and culture, and festivities of the India. You can use the content of this particular chapter in subjects in paper of GS1 in Indian geography and in art and culture. You can use this in GS2 in part of administration. It can be used for the content of essay, and it can also be used for the discussion of in the discussion of ethics. Okay, to discuss the essence of festivities or the modernization of the festivities. ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए इस लेक्चर के कंटेंट को यूज किया जा सकता है. For simplicity of this lecture, I have intentionally made a point that this lecture is very short and crisp, and we should focus only on the content or the part of data that can be utilized for answer writing. है ना? The purpose of this particular lecture is not, let me repeat myself one more time, the purpose of this lecture is not to make you understand certain concepts, but the purpose is to inform you about certain facts and connectivities which can be utilized for better answer writing, for quality answer writing. The purpose of the quality enrichment of the content. Alright, so I'll start immediately. The topic name is interconnections of the geography. So main concern is going to be geography and how does it impact art, culture and festivals in India. Geography influences the foundational aspects of geography influences the festivities, or rather settlements, livelihood, belief system, and thus the culture. The belief system is also, the geography influences settlements, livelihoods, belief system, and eventually the culture. For example, the rivers, the mountains, the forest, the coast, these shape
languages, they shape art, they shape food, they shape architecture and traditions. Let's take one example. The architecture in the Western Ghat, if you start walking from western coastal region of Maharashtra, the Sahyadris, and then you go down towards Goa, Karnataka, Andhra Pradesh, and the trijunctional area of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala, you see that that region is filled with heavy rainfall. It receives one of the highest rainfalls of the world, है ना? So वहाँ पे घरों का architecture जो होगा वो you will see like thatched architecture, thatched वाला, that will not be sloped. Or if you go to the Rajasthan, you will see flat dhaba वाला architecture, flat dhaba वाला architecture. That architecture is influenced from the geography, and that eventually shapes the culture. It influences the language, it influences the art, food, architecture. Now you must be wondering, language को कैसे impact करता है? Language को impact करने के multiple examples है. For example, if you happen to visit the higher mountains, जैसे कि लद्दाख का रीजन हो गया या सिक्किम के रीजन हो गया, अंदर वाला जो बहुत ठंडा माहौल वाला रीजन है, वहां पे अगर आप जाते हो तो यू सी कि देयर लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व pronunciation of very difficult alphabets or syllables. Their language is very simple, easy going, because they cannot afford to waste energy on pronouncing difficult words. वही अगर आप सदर्न इंडिया की तरफ चले जाओ, अगर आप तमिलनाडु या कर्नाटक या केरला में चले जाओ, the language, South Indian languages, yeah, if you go to the tribal languages of Nicobar Islands, if you listen to the tribal language of the Nicobar Islands, you would realize कि उनके जो pronunciation है, the alphabets or the syllables they use, it's extremely taxing in terms of energy. उनको बहुत मेहनत करके, बहुत energy deploy करके उनको use करना पड़ता है ना? Why? Because they need to loosen up their heat. The difficulty of the language directly, with the pronunciation का difficulty directly relates to the energy it requires to be utilized, to be used, है ना? So जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा humid environment है, वहाँ पे ज़्यादा difficult language use हो जाती है. So that's how geography influences the language. Let's take example. The Himalayas fostered isolation, leading to the growth of Buddhist monastery and distinct art like Thangka painting. The Himalayas fostered isolation, leading to the growth of Buddhist monasteries and distinct art like Thangka painting. Thangka painting is specific to the region of Ladakh and the higher Himalayas, where the religion of Buddhism has thrived. Now, important aspect here is Buddhism का जो religious thought process है, it is non-violent in nature. Okay? बहुत ज़्यादा वो resource utilization से दूर रहता है. Minimalist in nature in terms of the rituals, in terms of the material they deploy. बहुत ही कम materialistic. ये टाइप का रिलीजन जिसको नॉन वायलेंट रहना है, सिर्फ मेडिटेशन करना है, वो that was preserved and encouraged in the difficult terrains of Himalayas, because that kind of a difficult terrain of Himalaya and the isolative geography of Himalayas supported the development of Buddhism and the monastery. I'll show you the map of the Buddhist monasteries in Himalayas. You will get an idea. देखिए, these are the hinterlands of Himalaya. नुब्रा वैली के आसपास का रीजन है ये नुब्रा वैली है, झांस्कर है, मारखा, मतलब डिफरेंट रेंजेस आते हैं. यहाँ पे आपको लिकिर, वोंगसो,
Shea monastery, Tikse monastery, Stanka monastery, Mathu monastery, Stock, Stipuk, Dixit monastery. You can see all the monastery बहुत ज्यादा अंदर की तरफ है. लिकिर देखिए यहाँ, ये बाक्सो है, फियांग, सेमो, शे, थिक्से, स्तानका, थांगकॉक and Dixit. You see that there are so many monasteries hidden deep inside the Himalayas, because the religion of Buddhism required that peace, religion of Buddhism required that sense of isolation, religion of Buddhism required that sense of non-violent, non-materialistic atmosphere where they can grow further, they can practice their religious ideas. Now this is, for example, you saw this is Mayur monastery, stuck in the extreme isolated terrain of Himalaya. This is Likir monastery. This is the example of Thangka painting. If you notice, this Thangka painting doesn't draw any references or inspiration from Rajput school of painting or Pahadi school of painting, although Thangka is also in पहाड़ है ना, लेकिन हिमाचल या कश्मीर के पहाड़ों की जो पेंटिंग है उसका इसके साथ कोई रेफरेंस या इंस्पिरेशन इन्होंने नहीं लिया हुआ दिखता है. इट ग्रू ऑल टुगेदर इन आइसोलेशन. Let's try and understand how geography and art forms are related. See, like I said, mountain art का जो अभी example हमने देखा, the example was Thangka painting, right? Now, if you take a look, let's just understand it a little more. Mountain art में Thangka painting, Thangka paintings जो है, which we find in Ladakh, just understand this. These Thangka paintings are not very huge. Okay, they are small paintings. They are portable. They are spiritual art, and they are suited for the cold, mobile communities. Please understand this interconnection. They are suited for mobile communities. The people of Ladakh and the higher mountain regions, they need to travel a lot. They need to shift their bases during winters and summers, and that is why they need their godly representation to be mobile, to be easily taken over from one place to another, and they need to be very portable in size. They should withstand the extremities of the climate of the summers as well as of the cold, and वो सारे एलिमेंट्स आपको माउंटेन आर्ट के थांगा पेंटिंग्स में दिख जाता है. Let's take another example. रिवराइन पेंटिंग, रिवराइन प्लेन्स जो है, रिवराइन प्लेन्स का मतलब है जो हम ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बारे में जहां बात होती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनका जो प्लेन्स है उसके बारे में जब बात करते हैं तो दिस इज द रीजन हियर. फॉर एग्जांपल, मधुबनी पेंटिंग्स originated in Bihar and prospering in Bihar and currently becoming renowned all over the world. These paintings are tied to agrarian fertility rituals and water-centric life. These are tied to the fertility rituals. जिस रीजन में ये मधुबनी पेंटिंग होती है उस रीजन में फर्टिलिटी रिचुअल्स का रिप्रेजेंटेशन मधुबनी से होता है. मधु मतलब हनी एंड बनी मतलब वाणी, लैंग्वेज. लैंग्वेज ऑफ हनी is what Madhubani implies, and that through that paintings a female teacher, that most of the time it's mother-in-law or mother to her daughter or daughter-in-law, they teach the fertility rituals. ये riverine plains का example देखा. Let's take an example of coastal influences. ओडिशा में कोणार्क सन टेम्पल है ना. सो उस कोणार्क सन टेम्पल पे जो मैरीटाइम मोटिव्स है, लाइक व्हील्स, हॉर्सेस,
sun worships are linked to the coast. उनके सारे rituals, उनका रख रखाव, उनकी पूजा, उनकी अर्चना जो sun temple of Konark में होती है, those are directly linked with the region or the requirements of the coastal region. Third example could be forest areas. For example, in Maharashtra, Warli painting is done where the colors are organic or of organic origin. They are borrowed from the boru, which is a local natural element found in forest regions, areas closely associated with the forest. वो organic red color, white color का वो बनता है. And that's where you see the forest areas is filled with Warli arts of, especially in Maharashtra. This tribal art using mud walls tied to the forest and agricultural cycle. I'll show you example. See, this is Warli painting. Here, the walls are made up of mud, and the color is natural, organic. Why the walls are made up of mud? Why those tribal people have made the walls of mud? Because Maharashtra, the region where these paintings are curated, has high daily temperature. Daily average and annual average temperature of this region is very high, and mud acts as the element of insulation. It maintains the heat in the winters and maintains the cool temperature during the summers. तो इसलिए उनके ज्योग्राफी से ये डिपेंडेंट वॉल बन जाता है और लोकल कलर से वार्ली पेंटिंग बनता है. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ थंका पेंटिंग जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे. सी, दिस इज कोणार्क सन टेम्पल filled with the ritual associated with the coastal region of Odisha. इसका स्टोन, इसका स्ट्रक्चर, इसका डायरेक्शन, इसका where the painting is two-dimensional in nature, taught by mother to her daughter or mother-in-law to her daughter-in-law, and this associates itself with the fertility rituals. ये चारों जगह पे अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस कर रही है आपके आर्ट को, आपके पेंटिंग्स को. नाउ ये देखना, ये मधुबनी पेंटिंग जिस रीजन से आती है, दैट रीजन इज मिथिलांचल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार. वहाँ पे छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. छठ पूजा इज द वर्शिप ऑफ सन गॉड, है ना. तो मधुबनी के पेंटिंग में मोर ऑफन देन नॉट यू सी द रेफरेंस ऑफ सन बीइंग ड्रॉन. ठीक है. नेक्स्ट एस्पेक्ट, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द climate and material cultures are linked. Climate aspect of the geography and the material used in that particular geographical region is connected. Desert, Rajasthan अगर आप जाओगे तो डेली एवरेज और एनुअल एवरेज टेम्परेचर ऑफ दोज रीजन्स इज वेरी हाई. इट्स अबोव 40-45 डिग्री सेल्सियस. फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर द एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड 40 to 45 डिग्री सेल्सियस. वहाँ यू सी देयर इज अ यूज ऑफ येलो सैंडस्टोन. राजस्थान में येलो सैंडस्टोन का बहुत यूज होता है. व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर. इट हेल्प्स in maintaining the temperature. For example, जैसलमेर की हवेलीज देख लेना, they lead to cooling down of the temperature. Humid areas, say Assam में you see stilt houses, that is Changhar of Assam. You see these stilt houses to
अवॉइड द फ्लड्स, है ना. सो ये जो आपका मटेरियल यूज हो रहा है, इट्स डिसाइडेड बाय द क्लाइमेट, राइट. जहां पे ड्राई क्लाइमेट है, फॉर एग्जांपल आंध्रा है या मध्य प्रदेश है, वहां पे इन पेंटिंग्स नेचुरल डाइज का यूज होता है, बिकॉज देयर इज द लैक ऑफ मॉइस्चर अवॉइड्स द chemical reaction or fading away of the color, है ना. Hence you see the example of bark prints in Madhya Pradesh or kalamkari paintings of Andhra. They are suited for the sunny and the dry weather. See, these are the example. These are the yellow sandstone used in Rajasthan in order to avoid the hot climate and maintain the cool temperatures. Here you see these are the houses which you must have seen across the Assam, right. फ्लड को अवॉइड करने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट में इस तरीके के स्टिल्ट हाउसेस बिल्ड होते हैं थ्रू आउट द आसाम. ये वाला, दिस इज समथिंग दैट all of us who have lived in Assam, who have traveled in Assam, have seen these kind of houses. These are utilized, or these are constructed to avoid the flood prone distresses. This is the example of kalamkari painting. It is produced in the regions of Andhra Pradesh. The regions of Andhra Pradesh produces kalamkari kind of painting because this color or the portrayal helps in maintaining or balancing the temperature of Andhra dry regions, because यहाँ पे जो कलर यूज होता है वो ड्राई रीजन में मॉइस्चर के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, एंड दैट इज व्हाई द कलर स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड. After having seen the spaces of linkages of climate and the material used, let's just take a look at the geography and classical or folk dance forms. Let's take a look at agricultural celebrations. We come across, or we have heard about the agricultural celebrations, geography and classical folk dance forms. Okay, so agricultural celebration, Bihu of Assam or Garba of Gujarat. Bihu of Assam is the post-harvest dance around the land around the Brahmaputra, all of us know. Whereas the Garba of Gujarat, it celebrates the Navratri after the monsoon in arid lands. गुजरात इज एरिड और सेमी एरिड रीजन, और वहां पे नवरात्रि में गरबा खेला जाता है, एंड द गरबा कम्स आफ्टर द मॉनसून हैज अराइव्ड. एंड गुजरात में एरिड सेमी एरिड रीजन होने की वजह से वहां पे मॉनसून बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है. सिमिलर इज द एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल डांसेस, भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु और ओडिया ऑफ ओडिशा, Odissi of Odisha. They have grown in the temple periphery because the temple of that region provided them a protected environment where the worship of the deity, worship of the Lord could be inculcated or interlinked with the idea of bodily entertainment. Then there are certain terrain specific dance forms. टेरेन मतलब लोकेलिटी कैसे, उस हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल छाऊ डांस, छाऊ डांस ऑफ झारखंड एंड ओडिशा, स्पेशली अराउंड मयूरभंज रीजन. दीज आर मार्शल फोक फॉर्म फ्रॉम द फॉरेस्टेड एंड हिली रीजन्स. मार्शल मतलब वॉर लाइक, उसमें एक्शंस होती है, फाइटिंग लाइक एक्शंस होती है, एंड दोज आर फाउंड इन फ्रॉम फॉरेस्टेड एंड हिली रीजन्स ऑफ झारखंड एंड ओडिशा. यहाँ पे मैंने वो एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है. दिस इज बिहू डांस, ऑब्वियसली यू नो, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द बिहू डांस. हियर इज द छाऊ डांस. छाऊ डांस हैज मार्शल आर्ट्स का
certain specific types and actions जो इसमें यूज हो जाता है. This is also the form of Chahu dance, and this is Bharatnatyam. All these dance forms are associated with the geography they come from. For example, if you notice, the leg of Bharatnatyam artist is filled with the cham cham wala ghungru, and they used their legs to tap extremely hard on the floor, whereas in case of Assamese Bihu dance, the leg movement is very gentle, it's very feminine in nature, it is very delicate in nature. वो जोर जोर से पैर वैर पटकते नहीं है, वो बहुत सॉफ्टली पैर पटकते हैं, because the difference in the land. How this geography is sacred, becomes sacred and becomes a source of pilgrimage. Religious pilgrimage का source geography के थ्रू कैसे बन जाता है? रिवर वर्शिप बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में कि रिवर्स आर कंसिडर्ड एज द गॉडेसेस. फॉर एग्जांपल गंगा आरती होती है, यमुना आरती होती है, एंड देयर कॉन्फ्लुएंसेस आर वेरी सैक्रेड, साइट्स ऑफ कुंभ मेला. फिर वो गोदावरी रिवर का भी आरती होता है. नर्मदा परिक्रमा का बहुत बड़ा स्थान है. इफ यू नो एनीवन हु इज स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैज सम और द अदर टाइम dreamt about doing नर्मदा परिक्रमा, जिसमें नर्मदा नदी को ऑन वॉक ऑन फुट पूरी तरीके से परिक्रमा किया जाता है. इट्स अ ह्यूज थिंग टू बी एबल टू डू नर्मदा परिक्रमा. सो इंडिया के कंटेक्स्ट में टू डू द नर्मदा परिक्रमा और टू डू द गंगा आरती और टू डू द आरती टू अटेंड द कुंभ मेला हैज ह्यूज रिलीजियस सिग्निफिकेंस, एंड ऑल दोस कुंभ मेलास आर ऑलवेज फाउंड around the confluences of the one or the two big rivers, or the confluence of something very important, dominated by the geography. Second is you see the mountain shrines. For example, आप ये देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, these are spiritually revered Himalayan sites. These all are dictated by the geography. ये सारे के सारे एकदम extreme regions में ही है. Then we have coastal pilgrimage. Jagannath-puri Ratha Yatra. The rituals of Jagannath-puri Ratha Yatra are associated with the sea. समुद्र से associated उनके rituals है. वही रामेश्वरम में टेम्पल में एंट्री करने से पहले समुद्र में सैक्रेड बाथ लेना पड़ता है. This Kedarnath and this Badrinath. Here is the example of Ganga Aarti. You must have seen. If you have not, then I would strongly encourage you to experience this Aarti at least once in your life, because it is altogether different level of spiritual experience. This is Jagannath Puri Ratha Yatra, where 3 deities are taken out of the temple and put it on the charioteer and made to taken that yatra around the coastal region. The rituals of this Jagannath Puri Yatra are highly inspired or highly regulated by the rituals of the sea, oceanic. Let's take a look at another dimension, how geography is linked with the art, culture and festivals. There are so many festivals linked with the harvest. Like we just saw, just like Bihu is linked with the harvest in Assam. Similarly, Pongal of Tamil Nadu is linked with the rice harvest. This is the
पिक्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ पोंगल, बहुत राइस के हार्वेस्ट के बाद बहुत रिचुअलिस्टिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है पोंगल को। सेम एट द सेम टाइम पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट होता है जब व्हीट का हार्वेस्ट होता है। केरला में ओनम सेलिब्रेट होता है जब पैडी हार्वेस्ट होता है। सिमिलरली जो रीजन्स रेनफॉल टाइड है, मतलब रेनफॉल फीड से जो रीजन चलता है, जिस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन द रेनफॉल, रेन फेड एग्रीकल्चर, उस रीजन में यू सी दैट देयर इज द सेलिब्रेशन ऑफ तीज। मॉनसून फेस्टिवल है ये, राजस्थान और यूपी का तीज का फेस्टिवल कहते हैं इसको। देन देयर इज ए भातुकम्मा फेस्टिवल, celebrates flower that bloom after the rains. This Bhathukamma celebration is in Telangana. If you ever get an opportunity, Bhathukamma celebration में बहुत बहुत बड़ा ऐसे लाइक माउंटेन्स टाइप एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें से फ्लावर्स रखे होते हैं। फ्लावर्स का बना हुआ बहुत बड़ा एक डीटी काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसकी वर्शिप होती है, भातुकम्मा इन तेलंगाना। ठीक है। एंड द बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेशन, यू हैव बायोडाइवर्सिटी का सेलिब्रेशन, यू नो दैट दिस बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेशन इज हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, ट्राइबल रिचुअल्स लिंक्ड टू द फॉरेस्ट इकोलॉजी। दिस इज द ओनम सेलिब्रेशन, दिस इज द ओनम सेलिब्रेशन ऑफ केरला, दिस इज बैसाखी सेलिब्रेशन ऑफ पंजाब। It is linked with the wheat production, this is linked with the rice production. And obviously this is the festival of Hornbill, Nagaland festival, Nagaland का Hornbill festival. Next dimension of art and culture shaped by the geography, that is handicrafts of particular region and the ecology. Arid zone है ना, arid zone मतलब गुजरात, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब, ये वाला जो रीजन है दिस कम्स अंडर द एरिड और सेमी एरिड रीजन। यहाँ पे यू विल सी द हैंडीक्राफ्ट्स एंड इकोलॉजी, यहाँ पे यू सी द लिंकेजेस दैट द डिप्लॉयमेंट ऑफ ब्लू पॉटरी और ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसको बागरू या संगनेर ये कहा जाता है राजस्थान में। दिस द ड्राई क्लाइमेट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन इज आइडियल फॉर द डाई टू सेटल डाउन। जो डाई वो लगाते हैं उसको सेटल डाउन होने के लिए वहां का ड्राई क्लाइमेट बहुत जरूरी होता है। या इफ यू गो टू द हिली और माउंटेनस जोन, फॉर एग्जांपल कश्मीर, दिस कश्मीर रीजन हैज फेमस पश्मीना वीविंग स्टाइल। पश्मीना शॉल, पश्मीना का जो हैंडीक्राफ्ट है वो हिली माउंटेन जोन्स ऑफ कश्मीर से आता है। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हीट बैलेंसिंग ऑफ कश्मीर। कश्मीर के विंटर्स में बॉडी का हीट बैलेंस करने के लिए पश्मीना शॉल बहुत हेल्प करता है। एंड इट सूटेड फॉर द शिप रेयरिंग एंड द कोल्ड एटमोस्फियर ऑफ दैट रीजन। सिमिलरली फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देयर यू सी देयर द केन एंड द बैम्बू क्राफ्ट, द केन एंड द बैम्बू क्राफ्ट यू सी इन द फॉरेस्टेड रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, स्पेशली असम, मेघालय, यहाँ पे आपको बैम्बू आर्ट बहुत ज्यादा दिख जाता है। This is the artwork of Pashmina and this is the artist. This is just the example. Bamboo artwork from northeast, especially from Assam. This bamboo artwork is
important for two reasons. One, it is crucial for maintaining the climate or the maintaining the room climate in the humid climate of the outside. It is also because of the naturally availability of high availability of the bamboo. Last aspect is the language, cuisine and the dress from the lens of the geography, geocultural perspective. Language, for example, कोस्टल एरियाज जो है तमिलनाडु या केरला, कर्नाटका, there you see that the coastal areas were linked with the maritime trade, है ना, and that led to influencing the language. How it has influenced? For example, Tamil and Malayalam language, they have foreign language words linked with the loan, interests, principals, EMI. ये जो मॉनेटरी लेंडिंग से रिलेटेड जो वर्ड्स है ना इन तमिल मलयालम, वो काफ़ी सारे फॉरेन लैंग्वेज से आए हुए हैं. दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द मैरीटाइम ट्रेड ऑफ दोस कोस्टल एरियाज. Similarly, if you happen to study the tribal belts, you see that the language families are linked to the terrain. For example, Austroasiatic in forested Jharkhand and Odisha. There you see the use of vocals, different sounds. Instead of pronunciation of the right words, they use sounds, different kinds of sounds. Those we hear in jungle, जो पंछी, जो डिफरेंट डिफरेंट कीड़े, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जिस तरीके का साउंड का यूज़ होता है, वैसे यहाँ के लैंग्वेज में यू फाइंड द यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वास्टिक साउंड्स. कुजिन, फॉर कुजिन का तो बहुत सिंपल है, दैट ऑल ऑफ अस नो दैट ज्योग्राफी डिक्टेट्स द कुजिन. एरिड एरियाज में ड्राई ग्रेन्स, लेस वाटर यूज होता है, जैसे कि बाजरा हो, या कोस्टल एरियाज में कोकोनट है, सी फूड है, दीज डोमिनेट, राइट. ड्रेस में फॉर एग्जांपल नॉर्थ में वूल बेस्ड ड्रेस होता है, हिमालयाज में वूल बेस्ड, बिकॉज टू मेंटेन द बॉडी हीट you need to wear woolen clothing in the Himalayas, whereas in south cotton and drapes in humid zones. So basically the idea was very simple. As I had mentioned in the initial introductory remark, that today's lecture was very simple. It was meant to teach you certain basic linkages between geography and art, culture and festivities. Why I intended to introduce to this domain of the interconnections? Because you can utilize these interconnections not just in GS1, है ना, where art and culture or Indian geography exists, but also in essay paper. For example, geography is the mother of culture. ऐसा अगर आपको simple essay आ जाता है तो you will be able to utilize the content of this short lecture of 45 minutes. Then if there is a topic like festivals are the seasonal expression of cultural ecology. Festivals are the seasonal expression of cultural ecology. Even this is in this kind of essay, which is like simple and it's between the simple to medium difficulty level essay, you can utilize the content of this particular lecture. In cases in GS4, in ethics or case studies, cultural preservation versus development, example flooding sacred sites in dam projects, ऐसे अगर कोई example आ जाता तो इसमें भी इसका content utilize हो सकता है. Here are certain key phrases that you should note down, you should have in your keywords. Those are sacred geography, then ecological aesthetics and climatic adaptation in culture. ये तीन keywords मुझे ऐसा लगता है, या key phrases ऐसे लगते हैं that if you can note them down and you can utilize in your answer writing. Okay.
please go through this content. I have categorically tried to keep it very short. I have categorically tried to keep it very simple, and I have filled with examples which you can take a note of and can use in answer writing. Okay? Thank you so much. Have a good evening.